पहली बात तो ये कि जनाबे वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैन नॉट हियर दिस केस. Why? Because your lordship cannot decide or accept this case. Your lordships are sitting on a branch which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. इसीलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द जजेस हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन बी मेड पार्ट ऑफ. ये जनाब की भी जजमेंट्स हैं और ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस इस पे है कि एनी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड, constituted, are made a part of a court, tribunal, a bench, or full court, cannot sit in judgment of that law. This is the settled jurisprudence, not only from Pakistan, from the US, Canada, Australia, South Africa. All the known jurisprudence is unanimous on this point. यानी इसको ये इस तरह मैं समझूं कि आप कह रहे हैं कि 24 तो बैठ जाए बट नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. सर मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं. मैं अर्ज करता हूं. मैं फिर सवाल करता हूं. यानी आप कहते हैं कि बेशक 24 हो बेटा पानी दे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना कहलाए, वो सुप्रीम कोर्ट कहलाए. मैं अर्ज करूं उसकी वजह क्या है सर? Your lordships are wearing two hats. Am I right to? Your lordships are wearing two hats. Your lordships are wearing two hats. One hat is that of a constitutional bench, which is a disputed hat for all the honorable judges who would claim himself to be appointed by 26th constitutional amendment. Because that is an impugned amendment. That is a questioned amendment. That is the disputed amendment. That amendment destroys the total complex of the constitution. It destroys the organ of the state. मेरिट्स ऑफ द केस है ना आपके. आप इस ये amendment ने no military dictator had dealt with a greater serious blow to the constitution than 26th constitutional amendment.